A very good morning to all of you. Today is 25th March 2020 and we are under complete lockdown for our own interest, for our own happiness, for our own lives. So let's follow what our Prime Minister has said here. Today is 25th March 2020 and I am so happy that Gokul is in full bloom today for winter 2019-20. And let's take a look why I say Gokul is in full bloom. It's absolutely amazing, the best ever Gokul, I would say, at the end of March. It's smiling with joy. The flowers are absolutely scintillating. It's glorious. गोकुल जिसकी यात्रा आज से 51 साल पहले शुरू हुई थी और celebrating 51st year of gardening. What more can you ask for in life? Geraniums in front, dianthus, salvias in behind, begonias in front, petunias, impatiens, and behind that is stock, and behind that is pansy, and the beautiful, absolutely glorious lush green carpet. The pansies once again, on the dwarf hybrid phlox, coleus, the iris, the poinsettias, freesia, petunia, and one of the most beautiful blooms, the amaryllis. Absolutely glorious. This is absolutely beautiful. इससे ज़्यादा सुकून ज़िंदगी में क्या होगा जब आपके 7,000 बच्चे आपके लिए मुस्कुरा रहे हों, खिलखिला रहे हों. Gokul, our home garden, is dedicated to my grandfather, Gokul Chandraji Kabra, watching whom from the early age of 10 I started picking up gardening, and rest is history.
This has been named Gokul, dedicating this garden to a legend of gardening, my grandfather, Gokul Chandraji Kabra, who was a genius. And watching him, I started picking up gardening, and this is what Gokul is today after 51 years of gardening. आज के युग में और ख़ासकर आज के माहौल में हर जीवन की आशा, प्रकृति से जुड़ो, यही जीवन की परिभाषा। ठाकुर जी की कृपा है, और ये सब जो आप देख रहे हो, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है, और जो किया है सब उन्होंने ही किया है। मैं गोकुल में नित्य उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता हूँ, एंड यस, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। कईयों के लिए ये पागलपन होगा कि ऐसा कभी होता है, बट यस, आई गेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम him every day, and accordingly I do my gardening. Pots को मूव करना, कहाँ क्या लगाना, every day I am moving close to 100-150 pots, and just कोई मुझे अपनी शेखी नहीं बिगाड़नी है, बट 51 साल से I am the lone bagwan, the lone gardener of this amazingly beautiful creation of Thakurji Ishwar. Nurturing, caring, passionately connected to these 7,000 babies, which started from just 100 almost 45 years ago. During my just about to finish my schooling, Gokul, bhajans, photography, and writing a few lines जो अपने आप यहाँ गोकुल में जब मैं घूमता हूँ तो मन में आ जाती है, कोई शब्द आ जाता है, एंड आई राइट टू पेन डाउन अ फ्यू लाइन्स. सम ऑफ द रोजेस, वन कॉर्नर ऑफ रोजेस, चिड़ियों की चहचहाट आपको सुनाई दे रही होगी. दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल गोकुल. Around 10 to 15 species of birds almost come every day to bless Gokul, to sing in Gokul. राधा रस प्रेम सुधा, राधा रस वालिनी राधा, तोई मम स्वामिनी राधा. There are around 15-20 varieties of beautiful flowering creepers in Gokul.
the Mexican flame, Susan's black eye or the Thumbergia. This is Gokul, the Valley of Flowers, our home garden, and Gokul is in full bloom for winter 2019-20. And I am Ravindra Kabra, the Bhagwan, the soul, yes, soul Bhagwan of Gokul. There is no help, no gardener, and I am nurturing my 7,000 babies in Gokul. This is the beautiful Gokul. A garden of inspiration, a garden of joy, a garden of positivity, a garden of love, a garden nurtured with care. Every flowers seems to be smiling. जैसे हर फूल मुस्कुरा रहा है. I am also into landscaping, and I have done a few projects. I will name just a few of them: Umaid Bhawan Palace Hotel, the Taj Group of Hotels, some residential projects of Ansal Group Delhi, Parshvanath Group Delhi. Presently, I am doing one of the most prominent and one of the best high courts in India, the Jodhpur High Court new building inaugurated by President in December. And I am proud that I am working as a consultant to develop the beautiful greenery there. And maybe very soon, I had a meeting with IIT Director IIT Jodhpur, and probably would soon might be connected to develop the 850 acres land which IIT Jodhpur has. And it would be a proud moment for me. The amazing geraniums, खुरपी से लेके, झाड़ू से लेके, घास काटना, हेज काटना, पौधे लगाना, खाद देना, गमले मूव करना, सभी काम ईश्वर की कृपा से कर पा रहा हूँ. और मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता. That I am the lone Bhagwan, the sole Bhagwan of Gokul. And this is the entrance to Gokul. And this is the beautiful entrance to Gokul. हर प्रकृति प्रेमी का सपना मेरा गोकुल हो अपना. रंगों की अद्भुत है ये दुनिया, खुशियों का सबसे मधुर है सपना.
the euphorbias, the larkspur. The beautiful green corner with different bechias in back, Beloperan gutata, pentas, ticomas, Murraya exotica, dwarf nerium. Every flower seems to be smiling. As I said, this is Gokul, the Valley of Flowers, a garden, our home garden in the city of Jodhpur, Rajasthan, dedicated to my grandfather Gokul Chandraji Kabra, watching whom from the early age of 10 I started picking up gardening, and this is celebrating my 51st year of gardening this year, and I am so proud, so blessed that I have been chosen as the gardener of Gokul. This is the beautiful entrance to Gokul. The adeniums all pruned, ready to blast after 15th April. And this is probably one of the best Gokuls ever in last 51 years by the end of March 2020. And the beautiful waterfall. और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि इस वाटरफॉल पे कुछ पत्थर डेकोरेशन के लिए रखे थे, और I'll just zoom it, और उनमें से एक ने साक्षात ईश्वर के रूप में आके गोकुल में स्थान बना लिया है. This is absolutely one of the most beautiful things to happen in Gokul. I'll just zoom it and show you if you can see it. Just look at this. ऐसा लग रहा है ये 20 साल पहले, करीब 19 साल पहले बनाया था वाटरफॉल, और ये स्टोन सारे डेकोरेशन के लिए रखे थे. एंड दिस वन जस्ट नियर द क्रोकोडाइल में गणेश जी का जैसे स्वरूप आ गया. शायद गोकुल उनके मन को इतना भा गया, और जब गणेश जी आके विराजमान हो गए तो ईश्वर की इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती. एंड दिस इज नॉट द ओनली वन. There's one more stone. I'll show you. Look at this. This is what I call Ishwar ki kripa, Ishwar ka आशीर्वाद. आप
सभी मित्रों का आशीर्वाद मिलता रहता है, आपकी दुआएं मिलती रहती है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। This is absolutely stunning, mind-blowing, and Gokul at full bloom, winter 2019-20. Nothing could be more better. This is Gokul, the Valley of Flowers, our home garden in the city of Jodhpur, Rajasthan, India. If you have liked this garden, do subscribe to my channel and share this video to inspire others. This is a garden done single-handedly, nurturing 7,000 babies or plant, as I call them. My babies, they love me and I love them. They are happy when I am here. They miss me when I am not here. I miss them too when I am not here. It's an amazing relationship between us. ज़िंदगी मुस्कुरा रही है, ज़िंदगी खिलखिला रही है, क्योंकि जुड़ा हूँ प्रकृति से, जुड़ा हूँ ईश्वर से, जुड़ा हूँ अच्छे मित्रों से, जुड़ा हूँ अपने परिवार से। जो है उसमें खुश हूँ, जो ईश्वर दे रहा है उसमें खुश हूँ। और आप सबसे भी यही निवेदन करूँगा, जीवन में प्रकृति से जुड़िए, वो खुशियाँ हासिल होगी जिसकी आप कल्पना सिर्फ जुड़ के कर सकते हैं। एक बार गोकुल में आके देखिए, उसके बाद मुझे शायद आपको कहना नहीं पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ रविंद्र काबरा, द बागवान ऑफ गोकुल, फ्रॉम आवर होम गार्डन, गोकुल, द वैली ऑफ फ्लावर्स, in the city of Jodhpur, Rajasthan, India. Thank you for watching. Please subscribe to my channel if you have liked it. I'll be sharing regular photos of and videos of Gokul, and would be sharing my gardening tips, whatever I have learned in my 51 years of gardening. Though I am no expert, but still whatever I have learned would definitely share. Start sharing like how to grow seeds, how to care plants in summers, how to care plant in winters, in rains, what are the summer flowers one can grow, what are the winter flowers one can grow, what are the perennial plants, what are known as perennial plants. Perennial is permanent plants. How to care for your plants in winters, how to care your plants in summers, which are the best plants you can grow in your conditions, whether it is a flat, whether it is a house garden, whatever it is. So I'll start sharing gardening tips, whatever I know. I am no expert, again I say. दिस इज़ माई पैशन, और सिर्फ ईश्वर की कृपा है, और उन्हीं की कृपा से आज गोकुल इतना खूबसूरत है। मैं तो मात्र एक बागवान हूँ, अ वेरी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग एंड अ वेरी ऑर्डिनरी बागवान। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड जय श्री कृष्णा। कनेक्ट योरसेल्फ टू नेचर, बी द रीज़न फॉर समवन स्माइल एवरी डे। मुस्कुराते रहिए, जीवन आपका मुस्कुराहट से भरा बन जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। दिस इज रविंद्र काबरा, द बागवान ऑफ गोकुल, लाइव फ्रॉम आवर होम गार्डन, गोकुल, द वैली ऑफ फ्लावर्स, कुचामन हाउस, जोधपुर, राजस्थान, इंडिया, एंड आई एम रविंद्र काबरा. Every nature lover is welcome to visit Gokul. It would be my pleasure, our pleasure, to
welcome you in this beautiful world of flowers. Thank you. Bye bye. Jai Shri Krishna. Have a beautiful day.